जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 23 अक्टूबर, रात के बज रहे हैं 10 और शुरू करते हैं मार्केट के एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स की। उसके बाद हम कुछ सेक्टोरल चार्ट्स भी देखेंगे और अपने पोजीशंस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि एक बार वीडियो का फीडबैक दीजिए भाई। वीडियो आपको ठीक से सुनाई दे रहा है? यस, वॉइस ठीक से है? ओके जी। चलिए, हमने लेफ्ट साइड में वीकली चार्ट लगा रखा है और राइट साइड में डेली चार्ट है। दोनों में लाइन चार्ट हम फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कुछ आपको एक मार्केट में डेवलप होते हुए नए पैटर्न्स जो हो रहे हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट को देखें तो कल हमने बात करी थी कि जब तक प्रीवियस स्विंग लो ये पॉइंट था। एक काम करते हैं, राइट साइड को हम लेफ्ट साइड को हम लाइन चार्ट कर देते हैं, सॉरी डेली चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। कल हमने बात की थी कि जब तक प्रीवियस स्विंग लो 19,511 इंटैक्ट है, there is a possibility that this downfall of Nifty may stop at certain time and उसके नीचे का जो सपोर्ट था वो ये था 19,450 का 50-60 और अल्टीमेट सपोर्ट हमने बात की थी कि 19,260 ये इसका अल्टीमेट सपोर्ट था। और आज मार्केट ने क्या किया, दो सपोर्ट को तोड़ के सीधा मेजर सपोर्ट लाइन पे आ गया। समझ रहे हैं? इससे हुआ क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर है। देखिए, दो बार मार्केट इस लेवल पे आया, वहां से नीचे आ गया। तो अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट को पहला सपोर्ट और ये जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी आपको दिखाता हूँ क्यों। कारण ये कि अब अगर ये अपने सपोर्ट पर है, मार्केट को अगर बाउंस करेगा, बाउंस करने की भी प्रोबेबिलिटी है जस्ट बिकॉज ये अपने मूविंग एवरेज से काफी नीचे जा चुका है। 19,260 के आसपास है इसका मूविंग एवरेज, लगभग 19,600। तो 400 पॉइंट का पुल बैक जब तक आता है तब तक आ सकता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नीचे इसका पॉइंट अगर यहाँ टूटेगा तो इसका पहला लेवल आपको सीधा मिलेगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,874। यहाँ तक मार्केट आ सकता है और इसके नीचे जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। इसके वीकली चार्ट को देखें तो बहुत पहले देखिए, ये जो हमने मॉडल बना रखा है सुपर ट्रेंड वीकली चार्ट, सुपर ट्रेंड विथ एटीए वैल्यू 1, दिस इज अ फैबुलस चार्ट। मतलब आपको इतना अच्छा एग्जिट देता है। 18 सितंबर के वीक में जब सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ, तब से इस सुपर ट्रेंड रेगुलर नेगेटिव बना हुआ है। एक भी बार इसने सेल सिग्नल नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हमारी जो एक आशा की किरण थी वो हिकनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न था ऑन वीकली चार्ट। ये बोल रहा था कि इसका सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव था, लेकिन इस वीक द फर्स्ट डे ऑफ द वीक में इसने सेल ऑफ आ गया है। इट मींस इफ दिस सेल ऑफ कंटिन्यूज फॉर दिस होल वीक, क्योंकि आज डे का फर्स्ट वीक है, so this single day candle does not represent the whole week. We have to wait for the whole week. If the sell on the super trend on the Fibonacci candlestick pattern remains, then it means it has made a serious dent on the structure of Nifty. And it means, look at this, what happened last time. This super trend level that become negative on the Fibonacci candlestick pattern on 19 December 22 last time when it become negative, and then it remains negative till April 23rd. Means for the four and a half months this remains negative. 4 and a half months, 4 महीने के लिए मार्केट चला जाएगा। तो अगर इस वीक के नेगेटिव वीक की क्लोजिंग पे अगर ये सुपर ट्रेंड नेगेटिव होता है तो अगला अप्रैल यानी दिसंबर, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी बजट के सेशन तक ये मार्केट जा सकता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो ये वीक बहुत क्रूशियल होने वाला है। If we do not get any pullback in Nifty and Bank Nifty, then this is definitely going to have a serious dent.
और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आता है, अभी आपको दिखाऊंगा। सारे इंडाइसेस अक्रॉस द सेक्टर, सारे इंडाइसेस अक्रॉस द ग्लोब, they all are negative and they all have broken the series their support। ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं तो बनाइए, लेकिन एटलीस्ट जो आपके लॉन्ग पोजीशंस हैं एंड दोज हु आर टेस्टिंग देयर stop losses and they're hitting the stop losses, please exit it, please close those positions. You should have your stop losses very ruthless. Once the price hits the stop loss, immediately exit it. There is no point in being with the stock for any further time। ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में तो पहले से ही नेगेटिव था, और आप देखिएगा मेरा पुराना वीडियो, इस सुपर ट्रेंड लेवल को जब इसने इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पर तोड़ा था, तो हमने परसों के दिन तो हमने बोला था कि इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत नजदीक है और संभव है कि इसको रिटेस्ट करके बाउंस करे, लेकिन रिटेस्ट करके इसने तोड़ दिया। इट मीन्स द वीकनेस इन दिस बैंक निफ्टी इज सच अ ह्यूज। देखिए आप वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट में इसका नेगेटिव आ गया, यानी बैंक निफ्टी से आप कुछ भी उम्मीद करना ठीक नहीं है। बैंक निफ्टी तो क्या, और बैंक निफ्टी का वीकनेस, यानी बैंक निफ्टी आगे वीकनेस दिखा रहा है और निफ्टी पीछे, ठीक है। लेकिन आज हुआ क्या, हुआ ये कि बीएसई दिन में 12% अप था भाई, देख रहे हैं 1796 के लेवल से वापस आया है। तो जो हमने यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी, जो ओवर द पीरियड हमने पोजीशंस इसमें इंक्रीज करी थी, दैट इज ऑल रिवॉर्डिंग। पूरा पोर्टफोलियो मेरा डाउन था, आप इंडेक्सेस देखेंगे दे वर डाउन बाय 1.6 1.8 2%, 3% स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन था, but my portfolio was done by only 0.41%, 0.14%. So this is the magic of holding only strong stocks in your portfolio and cutting your losses, holding your outperforming stocks and cutting your underperforming stocks. That is the only way to lead in the market। टेक महिंद्रा हमने इसमें भी हैवी पोजीशन से बेसिक पे और वो इंटैक्ट है, मुझे डरने बात नहीं है। माय स्टॉप लॉस इज वेरी डिफाइंड। this once it goes below this 1560, I will exit it completely because the complete market scenario is very weak. I will not wait for this to come to its moving average cluster, and once I have put this alert, I will exit it once it does it। Second is Tech Mahindra, it is not performing, Tech Mahindra is not performing, it has does it 200-day exponential moving average on the daily chart. It has followed this, beautifully followed this downward lower low lower high structure, so there is no strength left with this stock. I'm waiting for this stock, very nominal money I have kept with this stock, just keeping the big tech IT name. But suppose at any fine time I want to withdraw that money, then I will withdraw it only at the time of full back. Suppose it goes to this level 1196, I will withdraw that money। LNT कल के ट्रेडिंग सेशन में we openly intimated everybody that we have exited this stock 50% quantity the moment it crossed its previous swing low of thin hair on this, and see what happened today. This stock was down by 2% in today's trading session, and on the weekly chart also its super trend is negative on the first day of the week. We will actually wait for this super trend. We have not exited the complete quantity, still we are holding 50% quantity because I have confidence in the LNT type of structure. But as its super trend has become negative, there is a possibility that it may remain in this level for another 1 to 2 months. So the money that is deployed in this stock that may remain stuck for under 2 months. So if it remains negative and even if it doesn't fall much, I will exit the quantity. On the daily chart also, this stock, actually I'm waiting for this. This is my stop loss, this breakout level. Once it closes below this level,
I will exit the full quantity. The solar industries. This is actually making a dangerous structure. It has bounced back from its lower level. We have exited actually 50% quantity when it broke its this small previous swing low. And we're still holding the 50% quantity. On the daily chart, you will see this is making the negative divergence. It is making a lower top, and if it goes below the previous swing high, previous swing low, it will actually start making the previous swing lower bottom. So, and the overall market scenario is also very weak. So if it goes below this in the tomorrow's trading session, I will exit it completely and will wait for this stock. Ideally, my stop loss is this super trend level, but as it is evident that it may go down at any fine time, I will exit it. That is not an issue. ICC Securities is one stock that I have entered yesterday at the closing session, means last trading session and the trading session. But today it gave a pullback of around 2%. So it is fine till the time it holds this level, or you can say this moving average cluster of 628. Till the time it holds, it is fine. If you look at its MACD structure on the daily chart, it is absolutely good, very encouraging. We are actually waiting for its support trend on the weekly chart to develop. Until it goes above its signal line, it bounces back from its signal line and move upward. It will not outperform. And given the international market scenario and the structure of Nifty Banknifty, the possibility of ICC securities to perform is remote, seems to be remote. But we are bound and follow our rules. Once it goes below its previous swing low, I will exit it completely. There is no point in discussing it further. Tata Motors is one stock which I have exited completely because it has already given a breakout last week. But if you look at this MACD structure on the weekly chart, you will see the MACD is actually taking a resistance from its signal line and is expecting I expect this to go down from here. This will be proven as a false breakout. That's for sure. Its MACD is reflecting at least. Next is CDSL. We are holding it till its super trend is positive. Once it goes negative, I'll exit at least 50% of the quantity. Zomato is okay. It has broken on the daily chart. It has broken previous swing low, small previous swing low. On the weekly chart, it is still intact till its super trend is positive. I'm with the stock. Once it goes negative, I'll exit it completely. Then Kalyani have exited 50% of the quantity because at fine time. ऐसा लग रहा है कि it may go deep क्योंकि इसका movement बहुत sharp था. And it is also making a negative divergence on the daily chart. See, it is also making a negative divergence on the weekly chart. Means there is every possibility for this stock to tank from here. See, it is making negative divergence. ATM. In the yesterday trading session, it gave a breakout. But in today's what happened? This stock is down by 6.47%. The downfall in this stock is huge. There seems to be a buy. देखिए lower level system buy आया है, but it took support from its super trend level. Ideally, I should have stop loss of this super trend of 890. Till the time it is buy, I'll be with the stock. Once it goes down, I'll exit it. तो ये तो हमने क्या किया, अपने स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया. अब हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो कैप इंडेक्स की, सारे इंडाइसेस की.
इस वीक में क्या हुआ, आज माइक्रो कैप इंडेक्स वाज डाउन बाय 5%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस वीक में ये सेल ही रहा, समझ रहे हैं, अगर इसके ऊपर नहीं गया, पुल बैक इसमें नहीं आया, तो माइक्रो कैप की जो तेजी स्टार्ट हुई थी 10 अप्रैल से, वो ओके ओवर हो गई। और ओवर क्यों ना हो भाई, आप ये देखिए नेगेटिव डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे, ये ओवर है। इस लेवल का स्ट्रेच बनाया ना, अगर सपोज किसी ने माइक्रो ईटीएफ में अगर पैसा डाला होता, तो वो एग्जिट करने का बिल्कुल टॉप है, ये इमीडिएटली एग्जिट करिए, ठीक है। तो आपको एक तो मिल गया यहाँ से नेगेटिव डाइवर्जेंस, एक आपको ये देखिए एमएससीडी कितना अच्छा सेल सिग्नल दे रहा है यहाँ पर। दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट ऑल द माइक्रो कैप्स इन द पोर्टफोलियो, एंड इवन इफ यू आर होल्डिंग माइक्रो कैप इन ETF form, exit it. This has made a long-term top in the microcap, at least 6 months of top. This top is not going to cross for the next 6 months. Let me put some remark here. Microcap has made a top. Microcap has made a top. It is the space. This will be the reference time. Yes, you can. Yes, yes, yes. You go. You can go. Okay. Please excuse me for a while. I'm just coming. हाँ जी, तो आई एम बैक। तो हम बात ये कर रहे थे कि चूंकि आज वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था और कल मार्केट बंद है ऑन द क्वेश्चन ऑफ विजयदशमी, जहाँ सबसे पहले आपको मार्केट की, वैसे पहले तो नहीं है लेकिन विजयदशमी के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवमी की शुभकामनाएं, वो मैं आप लोग को विश नहीं कर पाया। अच्छे से त्यौहार बनाइए, फेस्टिवल बनाइए, मार्केट में करेक्शन तो आता रहता है, लेकिन अगर कोई अच्छे से आपको हैंड होल्डिंग करे, मार्केट इज द इजिएस्ट प्लेस टू मेक मनी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। द ओनली थिंग इज इफ यू इंक्रीज योर पोर्टफोलियो साइज स्लोली एंड स्लोली, जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मतलब कैश को, अगर आपको समझ 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप 10 लाख को इस तरीके से यूज करिए कि एक लॉट के जैसे आपको आउट परफॉर्मेंस दे, ठीक है, ताकि आप लंबे टाइम तक उसको होल्ड कर सके। सपोज 30 लाख का पोर्टफोलियो, तो आप 3 लॉट की तरह कैश करिए, कैश में लीजिए, ब्रोकरेज लगेगी, डोंट वरी अबाउट दिस ब्रोकरेज, बट द रिटर्न दैट यू गेट दैट विल बी मैसिव इन स्टॉक, क्योंकि स्टॉक्स में आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डर नहीं लगता। फ्यूचर्स में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम यू क्लोज पोजिशंस जस्ट आउट ऑफ, क्योंकि आप एमटीएम नहीं देख पाते, ठीक है। तो अगर माइक्रो कैप इस वीक में भी अगर ये नेगेटिव रहा, तो इट्स स्टोरी इज ओवर। लेकिन अगर इस वीक में समझ लीजिए ऊपर चला गया यहाँ इस लेवल पे, सुपर ट्रेंड लेवल पे, और ये ग्रीन हो गया, देन देयर मे बी सम होप, जिसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये क्या है, हिकनाशी कैंडलस्टिक में अभी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मोर और लेस इट्स स्टोरी इज ओवर। अगर किसी के पास माइक्रो कैप ETF है, देन इट इज द टाइम टू स्टार्ट ऑफलोडिंग इट, ऑफलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। स्मॉल कैप की बात करें तो इसने भी सेल ऑफ दे दिया है, this one has also given a sell off. So if anybody is having, देखिए सब negative divergence is clear on the weekly chart, you can see it, see
And the best way to see the negative divergence is see the price is moving up and its RSI is moving down. It is losing momentum actually. Negative divergence doesn't mean the stock is going to tank. The chart is going to tank. It is simply saying the chart is losing momentum. See, it is holding. Then third is CNX 500. See, the CNX 500 has actually broken its previous breakout level, the previous retest level, and it has broken down this time. Its MACD is also a sell, and it is also making this negative divergence. Mid cap, mid cap में भी तबाही है. It has broken this long term 7 सितंबर से चला आ रहा था सपोर्ट लेवल, इसको ब्रोक कर दिया है. एंड इफ यू लुक एट, कल हमने इसकी बात कब क्या की थी कि ये इसको आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में जो प्रीवियस स्विंग लो इसने तोड़ा था 9047 का, this itself was an indication that microcap is going to tank. ठीक है, लास्ट वीक में ही तोड़ दिया था. लेकिन आप if you're not watching its line chart on the weekly chart, it is very difficult to guess the situation. और इसका ब्रेकआउट देखें कि एक बार ब्रेकआउट देने के बाद it has given a one-sided run up here. So this run up is not sustainable unless and until it is giving some sustainable correction from here. यूएसआर को देखें, ओ हो यूएसआर को देखें तो यूएसआर ने भी प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया है. Means what? Means the teji that we were expecting in the US oil, WTI crude, that is not going to continue for a while. Yes, the short-term correction is there in the US oil, but this correction will be huge once it goes. This correction will be sustainable once it closes below this previous swing low. ठीक है, जब तक इसके ऊपर है we can say it is a medium term correction only. डॉलर की बात करें तो यस, डॉलर ने क्या किया, प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया है. मींस डॉलर में करेक्शन थोड़ा सा डीप हो रहा है. ये करेक्शन बोलता है कि इक्विटी में तेजी आ सकती है, लेकिन इक्विटी तो टूट रहा है, जाने क्या होने वाला है. एक बार इसका सुपर ट्रेंड एक्चुअली नेगेटिव हो जाए ना तो मजा आए. एक बार 105.296 के नीचे पर क्लोजिंग आ जाए, then we can expect some rally in Nifty Banknifty. डॉलर इंडेक्स भी टूट रहा है. ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे मार्केट के बॉटम कहीं नजदीक में, क्योंकि निफ्टी इज ऑलरेडी एट इट सपोर्ट. और अगर यूएस ऑयल, यूएसडी आईएनआर, इन सब में करेक्शन आ गया, देखिए इसमें तो आ रहा है करेक्शन. डॉलर इंडेक्स जो है मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है. द ओनली थिंग दैट वी आर वाचिंग इज दिस एमएससीडी. जब तक नेगेटिव नहीं हो रहा है तब तक वी आर वॉचफुल. अगर एमएससीडी यहाँ से नेगेटिव हो गया, इसका मतलब देयर इज अ चांस दैट इट मे ब्रेक इट्स दिस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ सकता है. एंड अगर इसको तोड़ देता है तो निफ्टी चूंकि ऑलरेडी एट इट सपोर्ट, it may bounce back from here and a fresh rally can start from here. So be very watchful in the market. Whatever we are saying, that is based on the today's data point. This data point can change at any fine time, and you have to change with the market, with the data point. Right now on the daily chart it is bearish. It doesn't seem strong. It will be strong only when it goes above its previous swing high of 83.275. And as it has started moving on a lower low, lower high structure on the daily chart, and it has started trading below its moving average, that's a symbol that the weakness has, see, it has broken of its this so much of previous swing lows. It means there is a weakness.
If you look at this US bond yield, 2 years bond yield, it doesn't seem to be more bullish, but it is uptrending. Yes, if you look at this bond yield MACD, it is negative. It is turned negative. Means there is a possibility that it may tank from here. It is actually losing momentum. US 10A bond yield, it gave a broke out last week, and this week it has given a correction. Means what? If it starts moving, if it starts trading below its previous swing low, somewhere here, 4.610, then there is a possibility that the uptrend that we are witnessing in the dollar index, in the USD INR, that will cool down. उसमें cool down तभी होगा तो एक बार इक्विटी में तेजी आने से पहले there is a requirement for this US bond yield to cool down, and if it goes below 4.26, then only a sustainable rally can happen in equity markets. एक बार डॉलर को देख लेते हैं, डॉलर क्या कर रहा है. डाउ जोन्स DJI, डाउ जोन्स तो अपने प्रीवियस स्विंग्स को तोड़ता चला रहा है and started trading below 200 exponential moving average. It's weak. चलिए कल छुट्टी है, परसों देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है.